Okay guys, so after discussing point form, that is the first form how you can write down equation of a tangent. Okay, but मैंने बताया आपको कि मल्टीपल तरीके होते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखने के. तो एक तो हो गया पॉइंट फॉर्म, जब हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऑन अ पॉइंट x1 y1 which is lying on the circle. Now guys, the second form which we have is called as tangent in slope form. इसका क्या मीनिंग हुआ? सो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, यू नो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला ही पार्ट ये रिपीट होता है एग्जैक्टली. तो आप देखो, वी ऑलरेडी नो दैट y इक्वल टू mx प्लस c इज अ टैंजेंट टू योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन इफ, क्या कंडीशन थी? If this constant c becomes equal to plus minus r into, basically here it will be a because you know radius को हमने a square बोल दिया है, तो ठीक है, plus minus a into under root of m square plus 1. ठीक है, if my constant c becomes equal to any of these two value, then y equal to mx plus c is going to be a tangent. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप फॉर्म क्यों बोला जाता है इसको? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टैंजेंट इन स्लोप फॉर्म. सो यू कैन से दैट if I want to write down equation of tangent in the slope form, ठीक है, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विथ अ स्लोप m लिखना है तो वो क्या होगा गाइज? इट विल बी y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. राइट, c का वैल्यू जस्ट पुट कर दिया यहाँ पे, है ना. c was what? प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस एम स्क्वायर. So we have just put that value over here. So you can say if I want to write down equation of tangent having a given slope m, ठीक है, अगर आपको स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप इक्वेशन डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. गाइज, here you have both sides. That means again with the same slope you will have two tangent, और वो मैंने अभी आपको बताया भी था. ठीक है, so this is a very important point you have to understand. All right, now guys, let's suppose if I now want to find that what will be the coordinates of point of contact. ठीक है, तो आपको दिख रहा है first of all what is point of contact. So if this is a tangent with slope m, ठीक है, so the point at which it is touching your circle, it is called as point of contact. And guys, we will say that this tangent, or you can simply say that y equal to mx plus c will touch the circle at the points minus a square m by c comma a square by c, where this c is basically what? You know, r into under root of 1 plus m square, a into under root of 1 plus m square. So you can directly say कि अच्छा ठीक है, point of contact के coordinates क्या होते हैं? minus a square m by c and a square by c. कैसे आया सर ये? हाँ, क्योंकि ये तो ठीक है, हमें पता है, आपने डिराइव कराया था कि c का वैल्यू ये होता है, तो tangent in slope form is y equal to mx plus minus this thing. But how to find point of contact? So guys, let us assume that the point of contact are x1, y1. Now, if point of contact you have assumed as x1, y1, guys, can I say that if I want to write down equation of tangent at x1, y1, क्योंकि इसको मैं इस तरह से भी एनालाइज कर सकता हूं ना. बेसिकली if the point of contact is x1, y1, I can say we are drawing a tangent at x1, y1. तो उसका इक्वेशन क्या होता है? सर t equals to 0, right? So that can be, you know, for which circle? For your standard circle. We are talking about standard circle x square plus y square equal to a square, right? So t equal to 0 will be written as x1 plus y1 equal to a square. Okay, and we have that the same equation is nothing but it's your y equal to mx plus c. Tangent का इक्वेशन यही तो हमने बोला है कि this line is a tangent. So if you convert it into this format, basically guys, it will become mx minus y. All right, mx minus y, or you can say equal to minus c. So guys, this is also your equation of tangent. This is also my equation of same tangent. Same ही line की equation है. So if both are the same equations of line, what we will do, we can compare the coefficients over here, right? So if you compare the coefficient, guys, here the coefficient is x1, here it is m. So you'll say x1 upon m will be equal to y1 upon minus of 1 equal to a square upon minus c, which will become minus a square by c. So if you multiply c, what you're getting x1, it is coming minus a square m upon c, and y1 is coming
a square by c. Minus minus will become plus. So y1 is coming a square by c. So you can directly say that, okay, for any tangent y equal to mx plus c, the point of contact are going to be minus a square m by c comma a square by c. So this you have to remember a little bit, the point of contact, okay, but deriving it also it's very easy, alright, but you can remember this कि अच्छा ठीक है, y equal to mx plus c tangent कब होता है, when c becomes equal to plus minus a into under root of 1 plus m square. That means equation of tangent in the slope form can be written as y equal to mx plus minus a into under root of 1 plus m square, and the point of contact will be minus a square m by c and a square upon c. Alright guys, now let's see some questions so that you can understand this particular form in a good manner. Yeah, but before that, yeah, one more important thing. ये सारा discussion guys किसके लिए था? For this circle. This circle means center at origin. अब सर अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं हुआ तो क्या करेंगे? पॉइंट फॉर्म में तो आपने बता दिया कि हाँ जनरल इक्वेशन है, तो यू नो x1 अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है तो सिंपली x1 और y1 आएगा. लेकिन अगर x और y का भी टर्म हुआ तो हम x को x प्लस x1 बाई टू, y को y प्लस y1 बाई टू करके सॉल्व कर सकते हैं. यहां पर क्या करेंगे? हाँ, अगर मेरे पास सेंटर ओरिजिन नहीं हुआ देन हाउ विल आई सॉल्व, हाउ विल आई राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन स्लोप फॉर्म? क्या वो सेम रहने वाला है? नो, दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. C equal to R into under root of 1 plus m square is only for the circles with center at origin. तो अगर गाइस सेंटर ओरिजिन पे नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? That is center not at origin. So guys, this is important. So what we do in this case? So we say that let's suppose if your circle is having center x1 comma y1 बेटा, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to r square. ठीक है, रेडियस को हमने r मान लिया या a मान लेते हैं, ठीक है, a. Alright. So guys, for this particular circle, if you want to write down equation of tangent in the slope form, that means equation of a tangent having slope m. So what you will do, instead of y, you will replace it with y minus y1, and instead of x, you will replace it with x minus x1, right? A simple curve के लिए क्या equation था tangent का? y equal to mx plus minus a into under root of 1 plus m square. So here what I can do, if you see in this circle we have not done anything, we have just, can you see, we have shifted the center. That means we have shifted the origin from 0, 0 to x1, y1. ठीक है, तो गाइस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में आपने देखा था क्या डिफरेंस होता है? y becomes y minus y1, right? y minus k if you remember straight line, and x becomes x minus x1. So the only change is going to be the x in between, in you know x and y, it will be replaced with y minus y1 and x will be replaced with x minus x1. Other than that there will be no change. तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, x को x माइनस x1 और y को y माइनस y1 पुट करो, आपको मिल गया आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन स्लोप फॉर्म. ठीक है, तो इफ यू हैव सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन होगा तो सिंपली y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, और अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है देन गाइज इट विल बी सिंपली y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस माइनस a into under root of 1 plus m square. ठीक है, the only difference is x की जगह x minus x1 और y की जगह बेटा y minus y1. ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग. Alright, so the first question is find the equation of the tangent lines to the circle, tangent lines to the circle this. So again you can see center is at origin and radius is what beta? Radius of this circle is 3. Alright, which are parallel to this line. तो कहानी क्या है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो. गाइज वी ऑलरेडी नो दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल. दैट मीन्स कैन आई से दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी सेम एज स्लोप ऑफ दिस लाइन. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? गाइज इट्स वेरी इजी, इट इज -2.
ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव द स्लोप ऑफ टैंजेंट एज -2. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट इफ वी हैव अ सर्कल x square plus y square equal to r square, for this equation of tangent with slope m can be written as y equal to mx plus minus a into under root of 1 plus m square, where m is the slope of the tangent, right? M is the slope of this tangent and a is the radius, right? This is, guys, equation of any tangent with slope m. We want our tangent to be parallel to this, that means we want its slope to be -2. तो बस slope को बेटा आप -2 पुट करेंगे, radius you already have, it's 3 units, right? So 3 into under root of 1 plus -2 square, that will be 4. So we are getting equation as y equal to -2x plus -3 root 5. Okay, so you'll say the equation of tangent will be simply y equal to -2x plus -3 root 5. Okay, so just remember, equation of any tangent with slope m is given by this particular relationship. Okay, obviously with center at origin. अगर center x1 y1 है तो यहाँ y minus y1, यहाँ x minus x1 आ गया. That's it. Very simple question, right? Okay, good. Then let's see the next question. Next question क्या है बेटा? Find the equation of the tangents to the circle this which are perpendicular. So again, it's very similar kind of question. It's just here you don't have center at origin. हाँ, center at origin भी नहीं है, और आपको center radius form में भी नहीं given है circle. आप बोलोगे कि सर ये तो बताया ही नहीं था आपने तो x minus x1 होल स्क्वायर बता दिया था, y minus y1 अगर x1 y1 पे है तो x की जगह x minus y1, y की जगह y minus y1. यहाँ क्या करना है? तो गाइस यहाँ पे भी कुछ नहीं करना यार, आपके पास इफ यू हैव द जनरल फॉर्म, कांट यू फाइंड इट सेंटर? यस, द सेंटर इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय -2, दैट विल बी 11, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय -2. सो कैन यू सी सेंटर इज कमिंग 11, 2. रेडियस क्या होगा बेटा, निकाल लो. रेडियस विल बी अंडर रूट प्लस सिंपली अंडर रूट g स्क्वायर, दैट विल बी 121 प्लस f स्क्वायर, दैट विल बी 4 माइनस c. तो ये कितना आ रहा है देखो, 125 minus 25, that is 100. so radius is coming 10. तो आपके पास यार रेडियस 10 है, सेंटर 11, 2 है. so basically you can convert this general form into center radius form as well, like this. you can write down the equation like this na, r square. okay, so very simple guys, whenever you have center radius form you can convert it in, you have general form, आप center और radius निकाल ही सकते हो ना. बस question अब solve है. We need to find equation of tangent to this circle which are perpendicular to this straight line. तो अगर हमारा tangent इस straight line के perpendicular है तो guys इसका slope कितना है? slope of this line is -a upon b, that is -5/12. If we assume slope of our straight line, our tangent as m, so if these two lines are perpendicular, m1 into m2 should be -1. तो यहाँ से slope of the tangent देखिए आप कितना आ रहा है बेटा, 12/5. Okay, that means slope of our tangent is going to be 12/5. all right, and we already know that the center is 11, 2, radius is 10. so what will be the equation of tangent? Let me use a different pen over here. yes, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग. तो equation of tangent क्या होगा बेटा? in place of y it will be y minus y1, that will be y minus 2 equal to m, which is 12/5 into x minus x1, 11, right? x minus 11, sorry. Right, beta? x minus 11, 12 m into x minus x1 plus minus r, that or a, into under root of 1 plus m square. So m square will be what? 144/25. So guys, if you do the simplifications, y minus 2 is equal to 12x/5 minus 12 into 11. okay, so 12 into 11 will be minus 132/5. okay, plus minus 10 into 25 plus 144, that will be 169, which root will be 13 and root 25 will be again 5.
ओके तो गाइज बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से 5 5 और 5 तो कैंसिल होके यहां पर आ जाएगा, सो 5 into y minus 2 is equals to this particular thing. Okay, so there are going to be two tangents, right? We can say there are going to be two tangents, obviously with the same slope there are going to be two tangent. तो क्या आ जाएगा 5y minus 10 equal to 12x, and if you take the plus sign, minus 132 plus 130, that will be minus 2. Okay, so this is the first tangent, or you can say 5y equal to 12x plus 8. All right, this is my equation of tangent first, and if you take the minus sign, minus 132 minus 130, that will be minus 262, और 10 ऐड कर दोगे तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x minus 252. Okay, so these are the equations of two tangents which are perpendicular to this straight line and which are tangent for this particular circle. ठीक है, तो दो लाइंस होंगी with the same slope, 5y equal to 12x plus 8 and 5y equal to 12x minus 252. Okay guys.